Assalamualaikum everyone. This is me, Sindhu Sanwar, your host for the day. As you know, on Mondays we talk about careers and different career opportunities in our show Reimaging Education. When we talk about reimaging education, one thing that comes to my mind is how much we have evolved and we have actually, learned from different educational backgrounds, different educational careers. One thing also when we talk about education is that the awareness of most of the careers or most of the career opportunities somehow still lacking in Pakistan. Even though I do believe that there are a lot of people out there who are actually doing so much for the different career sites and building up of different careers, but I do believe that there are some people still who do believe in the conventional part of careers that okay, some part can go. I have a very special guest with me today. Her name is Amna Ansari. Assalamu alaikum, Amna. How are you? Walaikum assalam, Sundar. I'm fine. Thank you. How are you? I'm fine as well. Amna Ansari is a psychologist. She's a mental health coach, certified NLP practitioner. She's currently involved in a training and development program conducted by Performance Warren Nell, certified by the John Maxwell team. So, Amna, when I talk about your career and I talk about the different opportunities that I can see in psychology. So, Mhm. psychology is a very, very vast career, okay? And it is a lot of work. It takes a lot of work, takes a lot of hardship, a lot of different fields that you can actually explore in it. So you tell me about it, that starting off with your journey as a now a psychologist, you are mashallah, to what made you Amna Ansari, and now you're developing a program. So it must be big, but it must have different sides. So you tell us about it, please. So, yes, I would definitely agree with you. Okay, this journey has not been an easy one. थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो my major in FSC was pre-engineering, maths, chemistry, stats, ये सारी चीजें थी, physics. But I was never interested in all these things. I wanted to explore more. और मेरा हमेशा से इमोशंस की तरफ बहुत इंक्लिनेशन रही थी कि व्हाट आर इमोशंस, हाउ दे इम्पैक्ट आवर बिहेवियर्स. अगर कोई एक सर्टन तरीके से बिहेव कर रहा है तो व्हाई इज ही और शी बिहेविंग लाइक दैट. सो प्री इंजीनियरिंग के बाद आई कम्प्लीटली स्विच्ड टू सोशल साइंसेस, और उसमें आई गॉट द चांस ऑफ स्टडिंग बिहेवियरल साइंसेस. Behavioral sciences is a very vast collection of subjects. We studied anthropology, sociology, neurosciences, child psychology, हेल्थ साइकोलॉजी. तो वो एक कॉम्बिनेशन मिल गया था मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ने का. विद टाइम जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होती गई, इन्फॉर्मेशन मिलती गई, आई स्टार्टेड टू थिंक मोर कि मैं कहाँ पे इस चीज को अप्लाई कर सकती हूँ, व्हाट मोर कैन आई स्टडी इन डेप्थ मोर अबाउट. फिर मास्टर्स जब आया तो मैंने थोड़ा सा अपनी लाइन स्पेसिफिक कर ली, मैं अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ चली गई. उसमें भी 3-4 काफी मेजर एरियाज हमने पढ़े. न्यूरो साइंटिस्ट बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ा हमने, चाइल्ड साइकोलॉजी एडवांस लेवल में पढ़ा, फिर साइकोलॉजी इन जनरल हमने एडवांस लेवल में पढ़ा. सो वो मेरा जो है ना बस एक इमोशंस और बिहेवियर का इंटरेस्ट और डेवलप होता गया. फिर आई हैड अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 6 years. आई गॉट मैरिड, आई हैड किड्स बैक टू बैक, तो मेरा भी एकदम ब्रेक आ गया था. आई डोंट डू एनीथिंग. फिर मेरा कनेक्शन हुआ 2-3 लोगों से. दे एक्सप्लेन्ड मी कि ये एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक फील्ड है. इट्स इमर्जिंग एंड इट्स मोर लाइक एन एडवांस इन मॉडर्न टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड थेरेपी. सो मैंने उसकी सर्टिफिकेशन की, हेंस आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर एज वेल. फिर मुझे हुआ कि नहीं, एक स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक अप्रोच पे नहीं रहना चाहिए. मैं साइंटिफिक चीज़ों से ज़्यादा मेरी अप्रोच है एज अ होल ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग की वेल बीइंग के लिए कुछ करना. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कोचिंग. एक कोचिंग एक प्रोफेशन, एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है कोचिंग. व्हाट डज कोचिंग डू? वो एज अ होल इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को देखते हैं, वो एक स्पेसिफिक लाइन पे नहीं चलते. काउंसलिंग और साइकोलॉजी जो है वो स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है. कोचिंग जो है वो हर चीज को होल में देखती है, हैप्पीनेस एज अ होल, वेल बीइंग एज अ होल, और वो ज्यादातर फोकस करती है ऑन द प्रेजेंट rather than the past. What we as coaches can do in the present to help the individual जो हमारे पास आ रहे हैं. So from behavioral sciences and applied psychology, now I'm a mental health coach.
मेंटल हेल्थ कोच और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस. वही वाली चीज है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वेयर एज मेंटल हेल्थ कोचिंग उसमें निश जो है वो काउंसलिंग और थेरेपी का होता है, बट यू आर मोर फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, कि आप प्रेजेंटली उस इंडिविजुअल को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं उसके प्रॉब्लम्स में, एंड व्हाट मोटिवेशन यू कैन गिव टू दैट इंडिविजुअल कि वो फ्यूचर में मूव फॉरवर्ड कर सके. सो इट्स एन amalgamation of these interesting things कि वो NLP टेक्निक्स भी आती हैं, फिर कोचिंग भी आती हैं. सो थोड़ा एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, सिंस आई माई सेल्फ वेंट थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन, दैट वाज एक साइन था मेरे लिए कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर women out there especially who are lacking the information about postpartum depression. You can me being a psychologist as well, I was not able to identify what was happening with me, क्योंकि वो इतना impactful वो emotions होते हैं ना कि आप identify नहीं कर पाते unless you have a very good supporting system, which fortunately I had. But sadly in our society a lot of women and a lot of girls, they don't realize कि वो postpartum depression से गुजर रही हैं, और वो चीज complicate होके it may turn into any psychotic mental illness. So इस चीज को लेके भी मैंने अपना mental health coaching शुरू की, so that I can give the knowledge, the guidance, and the support to women who are young moms, or they are going to be moms, so they can have that kind of guidance and self education कि हमें ये साइंस, कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं जो हम अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दे कुड बी रेड फ्लैग्स, और ये दिस इज द टाइम वी नीड टू रीच आउट टू अस फॉर अ सपोर्ट. Another thing, Sundar, with So, I'm not talking to you about, I'm sorry no, I'm no. cutting you out, talking to you about postpartum Hmm. depression, or talking to you about the, because you yourself faced it, so you had an idea what it was, how you went through it, and how is the whole process gone. Talk about it, because usually in Pakistan, and I would say majority of the people, I myself, I was a science student, so I've seen that only the experiments that were done, they were done on men or they were done on animals. Women were Hmm. actually left behind, and somehow, if I can relate to it, one of the best literature novels or literature writings that was about a yellow wallpaper. Hmm. It actually talks about postpartum depression as well. We, as linguists and literature students, we have always been open about it. We talk about it. We see different problems, but people from different careers, and especially people who are entering their relationships, or Hmm. even girls who are going to become moms, inshallah. So there is a very, very thin line that we don't understand, Yeah. that we have to give our body, give our mind some time. Yes. It Yes. takes an individual a little time to refocus on everything, because your body changes, everything changes. So talk about that, Amna, that how much do you believe that, obviously you must have done it with different girls, you must have seen different Hmm. girls in it, and you must have practiced or experienced or experimented on it. So what are those few signs that we can see that postpartum depression actually reflects in? Okay. One of the biggest signs for postpartum depression is the mother starts either losing connection with the baby, or she's having a very difficult time in developing that connection with the baby. ये सबसे मेजर साइन होता है. What happens हमारे यहाँ, unfortunately, स्टेटमेंट्स एंड जजमेंट्स पास कर दी जाती हैं कि इसमें तो ममता ही नहीं आ रही है, तुम कैसी माँ हो कि तुम्हें बच्चे का रोने की पहचान नहीं आ रही है, तुम कैसी माँ हो कि तुम ना उसको सही से दूध पिला रही हो, ना खुद सही से खा रही हो. सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ये मिल के इतना प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं मॉम्स पे, इमोशनली एंड फिजिकली, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये जो हमारा कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, ईदर इज इट द स्टार्ट ऑफ द postpartum डिप्रेशन, और ईदर इज इट एक्चुअली द फैक्ट कि आई एम नॉट अ गुड मॉम. सो what I believe is कि जब आप when the girl gets pregnant, maybe during the second trimester or even the third trimester, there should be a proper guidance given by the doctor as well. Okay, you might experience these things. You might experience continuous crying spells. You might experience आपकी body आपका साथ नहीं दे रही है. You might experience the feeling that you're not liking the baby at all. So ये चीजें जब actually feel करना शुरू हो जाएंगी moms, तो they would be educated enough to understand कि this is something not right, और इस वक्त हमें एक support की जरूरत है.
अगर आप वो सपोर्ट अपने घर के इन्वायरमेंट से नहीं ले पा रहे हैं, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट अ प्रोफेशनल। आपके पास आपके गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर होता ही है, कॉल हर कि मैं ये चीज एक्सपीरियंस करी हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट डू आई डू। And there have been cases in the world कि the moms have actually, unfortunately, they have, strangled their babies, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस इतने हाई हो चुके होते हैं उनके, उन वो ना उनको अपने इमोशंस की आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, ना वो बेबी से कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है, ना सोसाइटी उनको वो टाइम दे रही होती है हील करने का। सो देयर हैव बीन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, या तो अडॉप्शन के लिए बेबीज दे दिए इस गिल्ट के साथ कि आई एम नॉट अ गुड मॉम, या दे हैव strangled the babies, or the moms have actually tried to have do suicide attempts with themselves कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। So there is a need of a lot of creating awareness about it. Postpartum depression is very very real, and you bringing another human being in this world is nothing more than a miracle. ठीक है, और पुराने जमाने की बातों से निकल के बाहर आ जाना चाहिए। This depression is actually taking lives, unfortunately. Please give a supporting hand to the new moms. हर मॉम एक डिफरेंट सेट ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस करती है, बजाय इसके कि उसको ये कहना कि अरे हमने भी बच्चे पाले हैं, बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो घर के काम भी किए हैं। हर बॉडी needs time to heal in every way possible. So this is क्योंकि मैं इस चीज से गुजरी थी, मेरे क्राइंग स्पेल्स बहुत थे, कनेक्शन विद द बेबी वाली चीज नहीं थी, बट आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ क्राइंग स्पेल्स। मैं क्राइंकी हो चुकी थी, इरिटेटेड थी, रिलेशंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे अराउंड मी, बट माई मदर इन लॉ वॉज वेरी हेल्पफुल विद मी विद इट। सो मैं क्यों इस चीज से बाहर निकल गई, बट हर जगह नहीं होता। सो समटाइम्स यू नीड टू सेल्फ एजुकेट योर सेल्फ फॉर दीज थिंग्स, एंड योर डॉक्टर और अ प्रोफेशनल काउंसलर से ये गाइडेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। That's so true. I would say I'm a very big supporter of mentorship, and that you should always have a mentor Yes. in your life, because sometimes your focus gets a little blur. And if you talk about it with somebody who has better experiences than you, and they Hmm. have seen the better scope in life, Yeah. or even they have studied about life, so they Yeah. can actually guide you way well about it. So I'm not Hmm. talking about opportunities ahead. And now that when I see psychology, I see a very Yeah. big and vast field. You were telling me yesterday as well when we were having a call, that's in this, it's like an Yes. endless sea. You have so many things in it. You want to, so you had a pre-engineering Mhm. background, came to psychology, and then you actually, went really well with it because you had an idea what to go for and how to go with. Yes. So you tell me, what are the things that are very very important Mm. for the opportunities even ahead, that a person who is choosing psychology as a career, what should their set be, their mindset be? Because usually hum log le to lete hain psychology because it's a Mhm. very hyped career Huh. now, Huh. because it has very very it's a renowned career now. Yeah. बट मसला ये होता है कि क्योंकि हम लोग वी डोंट नो दैट वी आर एक्चुअली ready for the career or not, Mhm. we kind Mhm. of cannot find our spark in it. So what do you think that the opportunities ahead, and as well as what should we be trained when if I am stepping into psychology? Okay. First of all, I would say that you need to have that empathetic factor in you, that you need to help people regardless of anything. ठीक है, regardless of the fact कि ये इस एरिया से बिलोंग करता है या इस स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, regardless of the fact. ठीक है. Secondly, psychology is not only restricted to mental illnesses or brain illnesses. When you have studied psychology, it opens the doors for you to explore more, for the fact ke how the relationships are going on, how the society is working, how the individual is working, how the individual is behaving, वो वर्क प्लेस में कैसे बिहेव कर रहा है, वो घर में कैसे बिहेव कर रहा है, वो रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव कर रहा है. सो यू नीड टू हैव दैट इंटरेस्ट इन यू कि अच्छा ये चीजें मुझे एक्सप्लोर करनी है. अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर अगर हो रहा है तो व्हाट इमोशंस आर इन्वॉल्व इन इट. इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनी पास्ट एक्सपीरियंस? Is it happening because of any
environments that the individual is living in. So ये चीजें सुनने में तो लगेगा कि these are not so important, but these are the most important things. ये factors हैं जिसकी वजह से how we are behaving right now is dependent on the factors around us. So if the people are empathetic, they want to understand the emotions by putting yourself in others' shoes as well, then you can ऑलवेज प्रोग्रेस इन दिस फील्ड. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो इस वक्त साइकोलॉजी के साथ कोचिंग की तरफ भी अब डाइवर्ट हो रहे हैं, बिकॉज कोचिंग एक आपको मजीद वास्ट एरिया दे रही है एक्सप्लोर करने का, हेल्प करने का, कि वो एज अ वो लाइफ को फोकस करते हैं रादर देन द इवेंट. सो दिस इज हाउ साइकोलॉजी कैन बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. अब जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बेसिक्स में साइकोलॉजी की रखती हूँ, लेकिन मेरा जो वर्किंग का जो मेरा क्राइटेरिया है वो कोचिंग के साथ लिंक्ड है. मैंने उसको कोचिंग के साथ लिंक कर दिया है. सो आपको एंटर होने के लिए यही 2-3 चीजें अपने अंदर देखनी है कि मेरे अंदर ये फैक्टर्स हैं कि नहीं है, कि मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ साइकोलॉजी को, इंडिविजुअल को मैं अंडरस्टैंड करने की मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है. Now, when I talk about, empathy, it's actually one of the biggest things that a lot of individuals do lack. And somehow we do not discover it until we are not, in a situation where we needed an empathetic shoulder, or when we don't, see somebody facing it in our, family or nearby. So, empathy is very important, even say, because I'm an educationist, and I do believe that empathy comes in my profession as well. Yes. Until or unless I cannot understand my student, it's very hard for me to, think Yeah. about or, develop any idea. So, Amna, thank you so much for this, small insight about your career. And but do tell me, because now you must see different graduates coming or different individuals, entering the field. People are, changing their fields as well. They think that, they can actually work in it. So what are those few tips that you want to give the future generation or the future girls or boys ahead that, keep this in your mind when you're coming in this profession? I would say first and foremost be empathetic. ठीक है, क्योंकि जब तक एज यू सेड कि ये चीज़ बहुत सारे इंडिविजुअल्स लैक करते हैं, और जब तक हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं आती एक्सपीरियंस करने के लिए, वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट एम्पैथी इज. यू you do not have to wait for a situation to be empathetic. ठीक है, look around you. There are so many people who do not have the basic necessities of life. आप कोविड की सिचुएशन देख लें. आई पर्सनली बिलीव इस कोविड की सिचुएशन ने बहुत सारे लोगों को एम्पैथेटिक बना दिया है, बिकॉज इट हैज क्रिएटेड a very sad blanket on everybody's life. ठीक है, one way or the other. A lot of people lost their jobs. A lot of people had to move back to their countries जहाँ पे उनकी जॉब हो रही थी, वापस होम कंट्रीज में चले गए हैं. और some of them even now they don't have jobs. ठीक है, तो अगर जॉब नहीं है, how are they living, how are they surviving? ठीक है, so this COVID is a big example of empathy. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड की हद तक रह के आप जो है एम्पैथी को अप्लाई करो, कहीं अप्लाई नहीं करें. दिस शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग एम्पैथी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, और जब आपके अंदर एम्पैथी आ जाती है, यू आर बेटर एबल टू कम्युनिकेट ऑन द लेवल ऑफ अदर इंडिविजुअल्स. उन्हीं के लेवल पे आप बात करेंगे, एंड इट बिकम्स easier फॉर यू टू कनेक्ट. What is coaching? Coaching is also coming at the level of other individual and having a common ground to communicate. और वो सब कुछ empathy से आता है. So this is my message to everyone out there. Start becoming empathetic about everyone. Don't wait for a situation कि आपके साथ कुछ हो तो समझ आए, या आपके loved one के साथ हो तो कुछ समझ आए. Whatever we are hearing these days or seeing these days is an eye-opening example for everyone out there. So this is one thing जिसको आप अपनी life में apply करके you can have a big change in yourself as well. I totally agree with you. Thank you so much, Amna. I really appreciate you giving us time and coming to Greenwich Thank you University's so much. platform Thank you so and much for talking having to me. our
Thank you. Talking to our students about the, in growing, what should I say, career opportunities in psychology. So this was Amna Ansari with us. The whole idea of bringing different individuals from different, careers is to help you guys understand that people are, developing a lot of different opportunities. It's up to you that how much interested and how much engraved you want to be in a career, and if this career is ready for you or not. It's better to have a mentor, better to have a coach than have nobody with you, because that actually develops way stronger relationships and it makes you more foresighted, more clear about what you're going to do in your future. This is me, Sindhu Sinwar, signing off. The holidays are near. I hope you guys are enjoying, and I hope you guys are, staying safe and staying at home. And Christmas is around the corner. I wish all my, Christian family a very, very Christmas. But I'll have a show about it as well. So we'll see you soon, inshallah, in that. So stay tuned for more. Thank you so much for coming. Allah Hafiz, everyone.